And we're live. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द KXIP Hangout with Circle of Cricket। और अभी हमारे साथ हैं अनुरीत सिंह। अनुरीत, वेलकम टू द शो। हेलो। अनुरीत, आपको कैसा लग रहा है किंग्स 11 पंजाब के साथ खेल करके? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी टीम के अंदर मेरे को चांस मिलने की अभी उम्मीद तो है। ऑब्वियसली अब टीम अच्छा करती आ रही है और जितने ज़्यादा मैचेस बनते रहेंगे तो उतने चांसेस मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ तो रहती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पंकज भी हैं, मेरे को होस्ट। पंकज, हेलो। थैंक यू सिमर, सत श्री अकाल अनुरीत। सत श्री अकाल जी। और ये बहुत बढ़िया लग रहा है आपको यहाँ देख के यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप यंग खिलाड़ी हो यार। अभी जैसे कि आपने कहा कि आपको पूरी उम्मीद है कि चांस मिलेगा। इनफैक्ट हम सारे फैंस भी चाहते हैं कि जितने यंग प्लेयर्स को चांस मिले उतना अच्छा है। मेरा सवाल आपसे बल्कि लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। आप जैसे कि देख रहे हो हमारी स्क्रीन पे एक इंसान है जो मिचेल जॉनसन जैसी मूछें लेके घूम रहे हैं। हालांकि वो मिचेल नहीं है। पर मेरा सवाल ये है कि देखो, आप भी बॉलर हैं, मिचेल जॉनसन इतने बड़े फास्ट बॉलर है, आपको उनसे कितना सीखने को मिलता है? क्या आप उनसे कितनी बातचीत करते हो? कुछ टिप्स वो दिए हैं उन्होंने वगैरह? उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि आपकी मतलब पेस वगैरह के लिए मेरे को बोला, तो कहते कहते सब कुछ ठीक है बट थोड़ा स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। तो मैं बिल्कुल स्ट्रेंथ के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। तो जो भी ट्रेनर है हमारे, जो है टीम के साथ ट्रेनर है, तो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने जो भी प्रोग्राम वगैरह देते हैं तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। वही चीज़ अभी उन्होंने भी बोली थी, वही चीज़ चल रही है अभी तक। फैंटास्टिक। तो हम यही चाहेंगे कि आपको जल्दी ही मौका मिले और आप भी हमें परफॉर्म करके दिखाएं यार। बहुत टाइम हो गया जरूर आपको जरूर। देखे हुए यहाँ पे। सिमर, बैक टू यू। थैंक यू। अनुरीत, हमने सुना है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो कुछ हो जाए, कोई आपका फेवरेट करंट सॉन्ग? जरूर, गाना तो मैं जरूर गा दूंगा। नैना दे हरफ पढ़ावां किवें, दिल ते लिखियां वखावां किवें, इन्हां सोचां विच रहिंदा दिल नूं अक्सर कहंदा हां, ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਢਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੇ ਨਾ, मेरा पीर जाने मेरी पीड़ ओ जाने ना। उत्तरी Thank you. गजा भाई, तालियां बजा दो भाई सब। भाई, दैट वाज ब्रिलियंट अनुरीत। Thank you, आपने thank you. हमारे फैंस का दिल बना दिया। They must जी। be really, really happy. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई, फैंस फैंस से याद है सिमर, आई थिंक इट्स टाइम कि हम अपने फैंस को भी मौका दें अनुरीत से बात करने का। जरूर जरूर पंकज। हम उमेश से शुरू करते हैं। उमेश हमारे साथ है। उमेश, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाय अनिर्बीत, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर। अच्छा सर, आपसे ये क्वेश्चन था। आप रणजी सीजन में वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स रहे हैं। जी। तो आप जब आईपीएल ऑक्शन में आप कॉन्फिडेंट थे कि आप अच्छा करेंगे एंड यू विल बी मैं आईपीएल में, पंजाब और सब? नहीं एक्चुअली क्या था कि जो सीज़न मेरा अच्छा गया है, सीज़न मेरा रणजी ट्रॉफी भी अच्छा गया है, वनडे भी टच छोड़ा अच्छा गया है। तो उसके बिहाफ में सोचा था कि ठीक है मैं किसी टीम में तो ज़रूर जाऊंगा। तो अभी मेरे को किंग्स इलेवन ने चांस दिया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मेरे को जब भी चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर अपने आप को प्रूव करूंगा। थैंक थैंक यू यू। अनुरीत। हमारे साथ प्रियांश भी है। प्रियांश, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। तो मेरा अनुरीत से ये क्वेश्चन है कि हम जो मैक्सवेल है लीडिंग रन स्कोरर है, तो उन्हें आप नेट्स में कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं, कहाँ बॉल डालते हैं? वो तो वहां पे भी मारते होंगे। वो जैसे वो मैच में भी बैटिंग करते हैं, जैसे वो मैच में करते हैं वो वैसे ही नेट पे करते हैं। तो वो उनका खौफ रहता ही है नेट में कि वो सामने ना मार दें, बस वो ज़्यादा टेंशन होती है कि फास्ट बॉलर अगर फॉलो थ्रू में उनका फॉलो थ्रू ही नहीं कंप्लीट होगा तो फिर क्या वो बॉल डालेगा। बस यही सोचते हैं कि उनको बस जितना हो सके उनसे थोड़ा दूर रखा जाए बॉल। बट वो बहुत इस टाइम पे रन कर रहे हैं तो हमारी टीम के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। थैंक यू प्रियांश फॉर दैट क्वेश्चन। अरे बहुत सही बोला आपने। इनफैक्ट अगर आप नहीं बोलते ना तो मेरा अगला सवाल यही था कि भाई घबराहट नहीं होती कि जब आप मैक्सवेल को प्रैक्टिस नेट्स में बॉलिंग कराने जाते हो? ऐसा नहीं होता कि भाई ये तू करा ले यार, चल नहीं नहीं मैं बाद में आता हूँ यार, मैं तेरा ब्रेक लेके आता हूँ, तू करा ले? ऐसा कभी होता है कि यार कि कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो जाएगा?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोच ने एक रूटीन बना दिया कि प्लेयर्स का कि जो जो बॉल डालने वाले हैं तो उनको ही डालना है उसको बॉल, तो फिर वो चेंज नहीं कर सकते। फैंटास्टिक है, लेकिन उससे सीखने को कितना मिलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने को तो ऑब्वियसली मिलेगा। जब आपके सामने एक अच्छा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे अगर अच्छा बॉल डाल सकते हैं तो आप फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में या ऊपर की क्रिकेट में आप बिल्कुल अच्छा करेंगे। बहुत सही। सिमर। हाँ जी। अच्छा अनुरीत, आपके ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा मजाकी, सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है? सबसे और ज्यादा कोई रीसेंट इंसिडेंट बताइए। सबसे ज्यादा मस्ती करता है संदीप शर्मा, हमारी टीम के अंदर अभी फिलहाल। तो सैंडी की एक आदत है, वो हमारे एक पुराने प्लेयर होते थे हरविंदर सिंह जी, तो उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है वो, तो मिमिक्री करता है उनकी। तो उस चीज को वो जिस तरीके से वो बोलता है, तो उसके बोलने से ही बिल्कुल हैरू भाई की याद आ जाती है। यार अनुरीत, इसी सवाल का ना एक दूसरा पहलू भी है, और ये मैंने शायद मनदीप से, प्रविंदर से और शिवम से भी पूछा था, और आपसे भी पूछूंगा मैं जरूर, कि भाई जी। मस्ती तो करता है, चलो ठीक है, और सबसे करता है, पर कोई एक ऐसा है जिसके साथ आपको भी डर लगता है मस्ती वस्ती करने में, कुछ मजाक करने में, ऐसा कोई प्लेयर है? नहीं नहीं, मैं ज्यादा मस्ती वगैरह बिल्कुल नहीं करता, बट ये सैंडी से ही ज्यादा डर लगता है कि वो पकड़ के कुछ हमारी बातें ना पकड़ के खींचना शुरू कर दे, तो इस चीज का मुझे डर रहता है उससे। यस सिमर, बैक टू यू। गोइंग बैक टू आवर फैंस, पुनीत है हमारे साथ। पुनीत, आप सवाल पूछेंगे अपना? पुनीत, सवाल पूछो अपना। चलो, जब तक पुनीत शायद थोड़ी देर में आएगा, इतने में मैं ही मौके पे चौका मार देता हूँ और अनुरीत से अगला सवाल मैं ही पूछ लेता हूँ। यार अनुरीत, हमारे फैंस जानना चाहते हैं कि अनुरीत की क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई। आज आईपीएल में, आज आप किंग्स 11 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट जब अनुरीत छोटा था तब किस उम्र से आपने खेलना शुरू किया, कौन किसने इंस्पायर किया, कितना सपोर्ट मिला, कुछ बताओ यार अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में। 3 इयर्स का था, तो मैंने क्रिकेट शुरू किया था, और डेली लीग मैचेस वगैरह खेलता था। क्लब को ज्वाइन किया, वहाँ जाके डेली लीग मैचेस वगैरह खेले। फिर वहाँ से दिल्ली के लिए स्टेट लेवल्स के लिए ट्रायल्स वगैरह दिए, बट चांसेस वगैरह नहीं मिलते थे। फिर रेलवेज वगैरह में मेरे को ऐसे ही भेज दिया, बस ये था कि जॉब का ऑफर है, तो फादर रेलवे से रिटायर थे, उनके बिहाफ पे मैं चला गया ट्रायल्स देने के लिए। तो मेरे को ये था कि जॉब के लिए ऑफर है, के लिए मतलब उन्होंने ट्रायल्स वगैरह लेने होंगे, बट वहां जाके देखा तो अंडर 19 और 22 के ट्रायल्स हो रहे थे। तो वहाँ तो कुछ उल्टा ही हिसाब हो गया था मेरे साथ। तो वहाँ फिर उनके साथ मैं गया, तो अंडर 22 के अंदर मेरे को सिलेक्ट किया उन्होंने। तो सिलेक्ट करने के बाद मैं वहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर बना रेलवेज के लिए फर्स्ट ईयर। देन नेक्स्ट ईयर मेरे को रणजी ट्रॉफी के अंदर चांस मिला 2008 में। और उसके बाद से फिर मैंने केकेआर टीम में भी था मैं 2009 में, 2009 2010। देन उसके बाद 4 साल के बाद मेरे को पंजाब की तरफ से चांस मिला। तो इसमें उल्टा कहाँ हुआ कुछ भी अनुरीत? सब कुछ तो सीधा सीधा बहुत बढ़िया हुआ है यार। और भाई बिल्कुल अच्छा है, मेरे को चांसेस वगैरह मिल रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है फिलहाल। चलिए सिमर, फिर अगले फैन के पास चले। हाँ जी, चलिए। राहुल। अभिषेक है शायद हमारे साथ। अभिषेक है हमारे साथ। हाय। हेलो। हाँ अभिषेक, अपना सवाल पूछो यार। हाँ जी। हाय अनिरुद्ध। हेलो। मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ साल पहले आप केकेआर के लिए खेलते थे और जी। अब पंजाब के साथ खेल रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है और कैसा लग रहा है आपको आईपीएल में वापस आके? केकेआर में था तो कहते हैं कि भाई कुछ ज़्यादा मेरे को नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम पे, कि जब एकदम से सब कुछ मेरे को एक साल के अंदर सब कुछ मिला, तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा मेरे को सीखने को कुछ समझ नहीं था उस टाइम पे। तो बट ये था कि 4 साल 5 साल का जो गैप था मेरे को, जिसमें इंजरीज वगैरह भी हुई हैं, बहुत कुछ सीखा, बॉल भी बहुत डाला। देन कोच वगैरह जो है मेरे रेलवेज के कोच हैं, संजय बांगर भी है यहाँ पे हैं। देन वो संजय बांगर भैया की कैप्टनसी में भी मैं खेला हूँ, तो उनके साथ रहा हूँ, तो उन्होंने सब कुछ बहुत सपोर्ट किया है मेरे को फिलहाल। तो देखा है मैंने, बहुत कुछ वहाँ से सीखा है, उनसे बहुत सीखा है। आज मैं उनकी कोचिंग में मैं हूँ, टीम के अंदर हूँ, तो सीख के बहुत कुछ मिला है। और आज पंजाब का मेरे को यहाँ पे पता है कि मैं अगर जहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं वहाँ पे बॉल डाल सकता हूँ। हर चाहे डेथ में बॉल डालना है डेथ में डाल सकता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला है इन 4-5 साल के अंदर। अनुरीत, इसी आपने मेंशन किया संजय भाई का, संजय भाई भी हमारे शो में आए थे और वो ही वाज ऑल प्रेजेस
अबाउट ऑल द यंग प्लेयर्स इन किंग्स इलेवन पंजाब, वो बहुत खुश थे आप सबसे। और जैसा कि आपने बहुत सही कहा कि आप उनकी कप्तानी में भी खेले हैं, आज वो कोच हैं। मेरा सवाल आपसे ये थोड़ा इनसाइड मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि संजय बांगर जो कप्तान थे जिनके साथ आपने खेला, और संजय बांगर आज जो कोच है, उसमें कुछ फर्क है? वो पहले भी बुद्धा थे, आज भी वो बुद्धा ही हैं। कोई चेंज नहीं आया, वो पहले भी शांत थे, वो आज भी शांत है। तो बुद्धा की शरण में आप लोग खेल रहे हैं भाई, फिर तो ट्रॉफी तो फिर तो बनती है। बस बिल्कुल पूरी कोशिश रही। सेवर। हाँ जी। अनुरीत, किंग्स 11 पंजाब में तो काफी सारे पंजाबी हैं आपके साथ। आप लोग कुछ भंगड़ा, कोई डांस करते हैं? नहीं, फिलहाल ऐसे ही अभी तक कोई ऐसा माहौल अभी बना नहीं है, लेकिन वो मजाक ही इतना हो जाता है कि हमारे को डांस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अनुरीत, माहौल का क्या यार, माहौल तो बन जाता है, हम लोग भी आपका सब यार दोस्त यार ही हैं, हो जाए फिर कुछ। माहौल तो अभी बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप सब मिलेंगे इकट्ठे तो फिर आपके साथ सबके साथ डांस किया जाएगा। चलो भाई ठीक है भाई, सर्कुलर क्रिकेट को, फैंस को, सिमर, मैं ये यहाँ मैं सबको बोल दूं कि अनुरीत ने प्रॉमिस किया है कि जब हम मिलेंगे तो अनुरीत हम हमारे साथ भंगड़ा करेंगे, और आई प्रॉमिस कि उसका वीडियो हम लोग बकायदा लेंगे और आप सबके लिए वो दिखाया जाएगा फॉर श्योर। सिमर, नेक्स्ट प्लीज आगे बढ़ते हैं। फैंस के पास वापस जाएंगे, टाइम कम है, तो उमेश आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ अनुरीत, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किंग्स 11 पंजाब में इतने बड़े नाम हैं, सहवाग, मिलर, मैक्सवेल, उनके साथ परफॉर्म करता हुआ कैसा लगता है और कितना कंफर्टेबल मेक फील करते हो आप? वीरू भाई वगैरह हैं, वीरू भाई के साथ अभी जो चांस वगैरह हमारे को यहाँ रूम शेयर करने का मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। जितने बड़े बड़े नाम है वो सीरियसली वो लेजेंड ही हैं सब, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता ही है। कोई भी अगर गलती है या कुछ है तो वो सामने से, अगर प्रैक्टिस वगैरह भी हम कर रहे हो, नेट्स में भी हो या कुछ हो, तो सामने से आके बोल देते हैं कि अगर तुम ट्राई करो तो उसमें 100% दो। तो वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखने को बहुत कुछ वहाँ से मिल जाता है। थैंक यू अनुरीत। पुनीत, आप अपना सवाल पूछिए। अनुरीत, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इस टाइम पंजाब बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, एंड मतलब फिनोमिनल, जो हमने सोचा भी नहीं था, सोच से भरे है। तो यही सवाल अगर पंजाबी में पूछ ले तो मजा नहीं आ जाएगा? बस लो भाजी, पंजाबी पूछ रहे हैं। अनिरुद्ध भाई, पहला तो सत श्री अकाल पंजाब लो। सत श्री अकाल भाजी। भाजी, आप दसोगे कि पंजाब ने तो इस बार फटे जाते बल्ले कराती, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਟੀਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ फाइनल जित के आई हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई पंजाबी में सुन के। थैंक यू अनुरीत, बहुत बहुत बढ़िया लगा यार। किंग्स 11 पंजाब का है भाई, सर्कुलर क्रिकेट फैंस पहली बार हुआ है कि सब पंजाबी में कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत ही सही लगा। सिमर, आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही कुछ और माहौल किया जाए। अंकल, समय थोड़ा कम है, तो अनुरीत मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जब क्रिकेट के लिए ट्रेन नहीं कर रहे होते हैं, जब खेल नहीं रहे हैं, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? ऑफ सीजन में मैं क्रिकेट अगर नहीं खेल रहा तो ऑब्वियसली क्रिकेट खत्म होती है, ऑफ सीजन हम लोग का शुरू होता है। ऑफ सीजन में वगैरह मैं ट्रेनिंग, बहुत मेरे को ज़्यादा शौक है ट्रेनिंग करने का। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं ग्राउंड में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, तो जितना मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसी से सीज़न की शुरुआत करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जब भी सीज़न स्टार्ट होता है उसके लिए पूरा मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना चाहता हूँ, वही तैयारी करी थी। फैंटास्टिक। सिमर, आई थिंक समय हो चुका है। अनुरीत, हमें पता है आपको जाना है, आपकी और कमिटमेंट से शायद यू वर नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो, मुझे ऐसा बताया गया है। तो मैं एक आखिरी सवाल के बाद शायद आपको जाने दूं, पर एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा अनुरीत आपसे कि यू नो यंग प्लेयर्स हैं, बिकॉज आपकी टीम में सुपरस्टार्स भरे हुए हैं, तो मौका मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यंग प्लेयर्स के लिए। तो आप भी यंग प्लेयर हैं, आप अपने आप को कैसे तैयार रखते हैं कि भाई आप अपने को मैच फिट किस तरह से रखते हैं ताकि कि जब भी मौका आए आप कंप्लीटली रेडी हो
परफॉर्म करने के लिए और अपनी टीम को जिताने के लिए? आप अपने आप को कैसे रखते हैं तैयार? मेरा काम है अभी बॉल डालना, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम टाइम अगर नेट्स में अगर मेरे को जितना भी टाइम मिलता है या जितना भी मेरा शेड्यूल तैयार किया जाता है कोच की तरफ से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा 100% दूँ उसके अंदर। अगर नेट में मैं अच्छा करता रहूँगा तो ऑब्वियसली मैच के लिए मैं प्रिपेयर रहूँगा। तो यही रहता है कि नेट्स के अंदर जितना टाइम हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो तैयार रहते हैं। और अगर मेरी टीम अच्छा कर रही है, मेरे को चांस मिल रहा है नहीं मिल रहा वो मैटर नहीं करता, बट ये है कि कोशिश रहे जब भी चांस मिलेगा अपने लिए तैयार रहेंगे, जब चांस मिलने के लिए तैयार रखेंगे अपने आप। फैंटास्टिक यार अनुरीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे पता है आपको भी जाना है, बट सारे सर्कल ऑफ क्रिकेट फैंस की तरफ से, किंग्स 11 पंजाब के फैंस की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने टाइम दिया। होपफुली आपको हम चाहेंगे कि मौका बहुत जल्द मिले और आप ताबड़तोड़ फोड़ के परफॉर्म करें और अपनी टीम को जिताएं। ऑल द बेस्ट फॉर द सीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, ladies and gentlemen, that was Anureet Singh. I know. Before you guys start complaining, कि भाई, we didn't have enough time. There were so many questions we wanted to hear from Anureet as well. But unfortunately, this is the IPL season and it's going on. As you're aware, there are a couple of matches being played as we speak, as we do this hangout. So there are engagements that these professional cricketers have to honor, and we, being their fans, also have to honor that, right? So let's just get back and start a conversation. We still have our fans here. We can have a conversation regarding Kings 11 Punjab. Then what's going to happen? Bhai Puneet, bhai Mohali mein baitha hua hai. I would love to hear from you. You and Umesh especially, because बड़े चुपचाप रहते हो. अभिषेक तो घबराया सा रहता है, तो अभिषेक से भी पूछेंगे थोड़ी देर में. But Puneet, my question is to you. वीरूपा के बारे में, पहले तो ये बताओ, सॉरी फॉरगेट अभी के लिए मैंने ये बोला, पहले बता कितना मजा आया यूरी से बात करके? भाई पंजाबी में भी तूने गल्ला कर ली हैं, कैसा लगा? हाउ डिड यू फील? भाई इट वाज अमेजिंग, talking to a Punjabi in Punjabi is always a good feeling, and especially when he is playing in a team which you are loving and which you are adoring, and it was amazing feeling for me. Right, fantastic. Puneet, मेरा सवाल अब ये है तेरे से, that talking about Virupa, obviously he's made one big innings which was 70 odd. The rest of them were like 30s, but he's been consistent. Let's give credit to Virupa that he's been doing a fantastic support to the team at the top of the order, 20 ball 30, 25 ball 37 or something of that sort. So वो start हमेशा दी है. Do you think this consistency के पीछे captain ना बनने का भी एक reason है, that he's not the captain, so he's free from the pressure? Because I remember when we started out, all this talk about New Zealand Punjab before the IPL, there was a lot of talk about should Viru be made the captain. Fans were divided on this, So what do you have to say to that, Puneet? Yeah, Pandit, I totally agree with you that this time and this season he does not have any kind of pressure of being captain. He's just focusing and he's just practicing on his batting. He's just focusing on batting, as we have discussed with him in the Hangouts as well. He said that I am just focusing that how to bat, and we asked him any changes or so. He said no, he said I am just keeping myself Virender Sehwag. How Virender Sehwag bats, I'm thinking just that I will keep batting the way I am. I think that's so true, because Virupa से जब हमने बात की थी, when Virupa came to our show and he gave us his time, this was a question that was probably put in front of him by one of the fans. I don't know whether it was you or somebody else, and he responded in the same way. He said that I'm a professional cricketer. It is my job to do certain, there is a role that I've been assigned, and I know what my role is, and I'm doing that, and I'm happy with that. And rest, what everybody else thinks doesn't really matter, and which I think is so true. Abhishek से जानना चाहूँ, Abhishek, you think कि भाई वीरू की परफॉर्मेंस जो है satisfactory है? हाँ, I know, हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि भाई वीरू हर बार 70, 80, 90 मारे और अकेले ही टीम को जिताएं, बट वो हर बार अभी उन्होंने स्टार्ट दिया, हर बार 30 का स्कोर किया है. आप खुश हो उससे? You think satisfied? एक्चुअली जिस तरीके से वीरूपा जी, एक तो उनका बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है. जब वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चौका मारा तो उससे सामने वाले प्लेयर को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, अपना वो बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी टीम के लिए.
So I think Correct. ठीक है. Okay. Umesh, any thoughts on this? You want to add to what Puneet and what Abhishek have said? Are you happy with Viru? Sir, मेरा थोड़ा opinion, my opinion is slightly different from them. My simple point thing is that with Virender Sehwag, I don't think so he will be personally satisfied with this performance. I know, with the kind of image he has in the international cricket, he would want to do well. And the big thing that I see missing still with Sehwag is his fitness. He's not as fit. He's not moving as quickly. We see him in the field. He's not as agile. But Umesh, he is Virupa. He was never moving that quickly since the time we've known him. But his bat. Let's just be honest here. We know all this talk about technique when it comes. Yeah, Puneet, I will come to you. All this talk about technique when it comes to Virupa and all that. He's been proving his detractors wrong for donkey's years. His eye-hand coordination is probably the best we'll ever get to see. The numbers are there to prove it. So I take your point, Umesh. I think you're saying कि अगर कोई है जो probably dissatisfied होगा इस performance से विरूपा की, हो सकता है शायद वो विरूपा खुद हो. So that is possible, and that we have to respect Virupa on that. Puneet, you wanted to add something to that? Yeah, Pankaj, that I wanted to say that एक प्लेयर जो होता है वो कभी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होता. He always want to do something better and better and better. That's we all know. But according to team, till the time he's playing good and he's contributing, it is satisfied. It is satisfactory. Okay. And another thing which Mumbai said, that he is not that much swift or that much quick in the field. We always know that he is a good slip fielder, and he is a good catching position fielder. He's never been that much boundary line patroller also, that he's patrolling boundary line. True. Yeah. I think Puneet, I'm sorry to interrupt you, but I think that is a debate that I do not want to start here. See, because to tell you the truth, you also make a very valid point that I think for the last 10 years we've all known that Virupa is one of the safest pair of hands in the game in the Indian side, and he's been in the slip quadrant always. So I think he knows. I think that he knows. His team management also knows. Sanjay Bangar knows that this is Viru's strength, and we're just happy as fans of Punjab, as Kings 11 Punjab, and I think we're just happy that Virupa is performing consistently. I think 30 in a T20 format is like the ODI 50. So the fact that Virupa is getting these 30s consistently bodes very well for the team. Simar, I know that you had so many topics that you wanted to talk on, so I'm going to give the mantle to you, the baton to you. Go for it. Yes. Okay. Moving on from Virupaji, would you guys like to see the some of the star players of the team rest out for a couple of matches and to try out the newer players, as they're anyway doing, some more newer players? Puneet, probably. Yeah, Simar, actually, we did discuss this in last issue as well. But I don't want whole pack out of that. I want, okay, you can rest one player for one match and next year. But keeping the whole pack out of that thing, out of team, it will not good, because yeah, they are in the playoffs, but they should finish first in the first position in the league matches. So they, as I said in last issue as well, that it will give them two chances. We know that they are playing that much better good cricket, that it does not it doesn't make any difference. But yet I want them to finish on the top of the table, so they should keep the gas, keep the foot on the pedal acceleration. So yeah, it will be better. Okay, Priyansh, your thoughts? Yeah. So I think that they need to continue the winning combination. They can rest. I agree with. Okay, Priyansh apparently wanted to agree with someone. Priyansh, we lost you in the middle. Could you just tell us once again what your thoughts on this subject were? Yeah, so I was saying that I think they should keep their winning combination going, and I agree to Puneet that they should rest one or two players, because the way Rajasthan rested 3 or 4 of their main players,
it affected them in the last game. So I don't pick Kings 11. So that Okay. was Okay, okay. Umesh, what are your thoughts? See, it is a very good idea to give the youngsters a chance, or maybe the people on the bench. So if there is a situation of injury or some other situation, so you have people match fit and match ready, which could prove to be very effective in the big matches like semi-final and final. Fair enough. What about you, Pankaj? What is your take on this? No, Simar, first of all, I think if Kings 11 Punjab is one team with which the youngsters cannot complain to, saying that you did not give us a chance, because they have been giving enough chances to everybody, almost everybody, once in a while. First of all, to pick youngsters like Shivam Sharma and Akshar Patel, Sandeep Sharma. So you see, what the makeup of the Kings 11 Punjab side right from the beginning has been a mix of these foreign top stars, which you have to play because you've bought them, and it makes sense to use them, because you spend so much money on them. And they're So well. yeah, and they're performing as well. But if you see the makeup of the side, apart from these four top stars, that you have, whether you keep Glenn Maxwell, Miller, Bailey aside, and everybody, then you look at the rest of the side is made up of the young stars. Apart from Virupa, Virupa, I'm not saying he's very old; he's just probably 33 or something. But the rest of the side, everybody has been given a chance. Sandeep was, shown faith in by Sanjay Banga right from the beginning, and look at what he's done for the team. He's got Chris Gale out twice. I mean, it's unbelievable. I think Sandeep Sharma sometimes would not believe what he's done so far. I know he's had not exactly. I think in one of the previous games he got belted out of the park. He had a bad day. It can happen to anyone. But look at Akshar Patel. We were just, in fact, Sima, you and I were just talking about it, about Akshar Patel in, just some time back, that everybody knew about his bowling, but who knew about his bowling? Sanjay Bangal, and he showed faith right from the beginning, and then he performed so well, and then suddenly Bailey goes to him and say that kid, go win me the game, and that's exactly what he did. He just won the game outright. I mean, he showed temperament, class, and everything. But as we just spoke with Anureet, I think they have probably an opportunity in a couple of matches now that they've qualified to probably make one or two changes. And I agree with Puneet and Priyansh both on that, that you can't suddenly just completely throw out the real makeup of your team and just expect people to come in together and just win you the game. One or two changes is okay because it doesn't really change the balance of the side too much, because knowing Sanjay Bangar and Bailey, they will not put in a youngster who does not fit into the scheme of things. It's not like they're just giving a chance just for the sake of it. They are being smart about it. They pick of players depending on the venue they're playing in, on the conditions that are available. So they've been very smart. So I don't think they can do much more than what they've already done. Yes, but I would love to see Anureet, and probably maybe you'll give Sandeep a rest and give Anureet a chance. And similarly, there are a couple, maybe Shivam. Shivam suddenly just came into the limelight and he bowled brilliantly. What a pick by them, right? So similarly, if they have more in the arsenal, give one a break for one match. Let them try it out. See, remember, it's not like this team is going to change suddenly next year, right? So they also have to figure out the plan for the future. This team is going to be together for a while. So not only they're doing well for this time, but this is also a great opportunity for the Kings 11 Punjab side, because they have such a young side to prepare for the future IPL as well. So I think one or two games is okay, and as Priyansh and Puneet both rightly said, that not too many changes, maybe one or at max two, which is acceptable, and I'm good with that. I'd agree with you, Pankaj. It's a very good model that they worked on this time, bringing in a lot of younger talent every now and then, and adding one person, and at the same time keeping their stars in order. It's just very encouraging. I'm presuming for all these cricketers and for us as fans to even see
that they're all being given this opportunity. I think it's a model that should generally be picked up by the national team at some point, if at all they seem to like the idea of it. But But the Simmer, if you think about it, there is another side to the story. What if this model that they've done had not clicked? Then everybody would be going against it, that this is not the model, this does not work. Yes, it's worked now, but as I said, for one season, yes, it's worked. But remember, the team combinations, everything is new for all the sides, right? Kings 11 Punjab seems the side which has gelled the most, which is great. But let's not count the fact that come next season, things would be better in the other teams as well, right? They're all professional cricketers, so it might just change. So let's just enjoy this of our team, for Kings 11, that as long as it lasts, and I hope it lasts till the time, as fans, we want this to be forever, right? But we all know, we're not just random fans, we know a little bit of cricket. So, this will not last forever, but let's just enjoy it as long as it does. absolutely, absolutely. Coming to Maxwell. Maxwell's been playing a high risk game for a very long time now, and he seems to be pulling it off all the time. So, do you think he's taking the T20 batting to another level altogether? I Pankaj, think I think before I go, let me just get in from a young cricketer. There's a budding cricketer we have right now. Priyansh is with us. I would love to get his thoughts in before I try and decipher, what Maxwell has been doing. Priyansh. Yeah, he does play long shots, but he drives also really well. The technique he's been using, I think it's commendable to see so much hitting with just drives and all. In the last match, you saw Manan Bora also driving that shot for six. So I think that the management has done really. They've given a fair chance to Maxwell because last year he was there with Mumbai. Akshar Patel was there with Mumbai, but they didn't get enough chances. So this time they've proved all the critics wrong. That no, we do have young talent. From Australia also, we do have young talent, and they can perform better than the more experienced players. I Fair enough. think, yeah. अभिषेक, यार क्या सोचता है? यू थिंक कि भाई मैक्सवेल जिस तरह से खेल रहा है, दैट इज द न्यू T20 वे, अब सब वैसे ही खेलने की कोशिश करेंगे और सक्सेसफुल हो गए, या और यू थिंक कि नहीं भाई, दिस इज मैक्सवेल, वो थोड़ा स्पेशल है, वो ये कर पा रहा है, इसका मतलब ये कि नहीं कि सारे ही वही कर पाएंगे? तेरे क्या थॉट्स है इस बारे में? आई थिंक मेरा तो ये सोचना है कि अभी मैक्सवेल बनने में बहुत समय है। अपने यंगस्टर्स अभी अच्छा खेल रहे हैं, अभी एक दो सीजन निकलने के बाद वो बहुत मैच्योर होंगे। अभी सभी डिफेंसिव हैं, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं अभी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, अलग अलग टीम्स के साथ में हो रहा है, नए कोचेज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आगे मैक्सवेल बनने के लिए तो मेरे को लगता है एक दो IPL निकल जाएंगे, उसके बाद ही कोई एक प्लेयर मैक्सवेल जैसे पोजीशन पर पहुंच पाएगा, तो इसलिए समय है। Unbelievable from Abhishek, such a mature thought. I never thought कि अभिषेक इतना सेंसिबल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अभिषेक बुरा मत मानना। हम लोग, तू कम आता है हमारे हैंगआउट्स में, तो मैंने इतना सुना नहीं तो, बट यस, अ वेरी सेंसिबल रिस्पॉन्स फ्रॉम Abhishek. And Simar, we lost you for a second. Good that you're back. I think let's just get in Puneet and Umesh's thoughts as well. Let's just hear from Umesh first. Now, Glenn Maxwell is one guy who just plays in one gear. So, I don't know, he currently seems to be in very good form, but what happens is one question that needs to be asked. Okay, fair enough. I think Generally comes off well when you're in good form, when you're playing like this. But what if when you're not in good form and when you have to, adjust the game? How does he respond? That is. I think the entire cricketing world is asking that question and probably trying to figure out. Let's see, or rather, everybody is waiting with bated breath. That let's see how long this form of Glenn Maxwell lasts. But a fair point, anyways, Umesh. I think it's a fair point that everybody is talking about. So. Yeah, Puneet, your take on Maxi? Yeah, Pankaj bhai, for me, I have seen Maxwell from last couple of years. I have been following him in the PPL as well.
he is the one who never changed his game. He never tries to change his game. He just come and keep hitting it, on the over the mid wicket, over the square, like over the long one. He just keep playing his game. That's what I like in him. As Umesh was saying that we don't know how long for his form lasts, but what I feel, it is his class. He's riding on his class, not on his form. He is playing by the class. The way he plays, he will keep playing that thing. For me, it will go long if he keep playing in such manner. That's what I feel. Fair enough, Puneet. If I have to kind of rather solve or decipher this mystery that is Glenn Maxwell, I would go back to the couple of Kings 11 hangouts that we had, and we had some youngsters and other players from Kings 11 come and say that, see, it is not all madness when it comes to Maxwell, and they are the people who have been talking to Glenn Maxwell and seeing him train at the nets. So what they say is that it's not all madness. There is a method to its madness. He works at it. We see him hit certain shots so cleanly that it almost feels effortless or unbelievable. But what they are saying that he is working at it day in and day out. He's working hard. And when Glenn Maxwell was asked in one of his interviews, when I think Ramiz Raja pointed out saying that is this all so easy? And Glenn Maxwell said that no, I am working at it. I have a plan. Yes, I mean it's very easy for everybody who watches Glenn Maxwell play on television to think that ye to pagal hai, he just goes nuts. He's a freak of nature. But to tell you the truth, when Glenn Maxwell said that I have a plan, he said that when I go out there, I look at the conditions, I look at the bowling also, and it just so happens that there'll only be 4 or 5 bowlers. So he has a plan for all 4 or 5. So it just so happens in the match, in the duration of the match, that when he's out there to bat, out of those 4 or 5 bowlers of bowling, he already has a very set frame of mind that this bowler, this is what I'm going to do to him. And what is happening this time around, that he's able to replicate what he's doing in the nets on the pitch, and that's why he's got some 500 odd runs this time. And I agree also to a certain extent with Umesh also that this might not last. As we know, I mean, there are certain examples. Look at Virat Kohli. People were talking about him, unbelievable this and that, suddenly not happening, right? So as Punjab fans, we don't want that to happen. We don't want this run of luck or form, whatever we might want to call it, Puneet. We don't want this to end, but it can happen. But the fact is, he has a plan. And I would take Glenn Maxwell's word for it. I will take the word of his teammates who have shed some light on this, which is brilliant. And the fact that us fans are privy to such knowledge and have the opportunity to get that from him, himself is just brilliant. So that was my take on that question of yours, Simar. Thank you, Pankaj. My next question is again for all of you is KXIP has been the favorite for many fans this season, even people who've been neutral in the past. What do you think is the reason? Apart from all of us loving the team, there's a lot of people out there who usually don't take sides so quickly. Let's see what Puneet has to say. Sorry, what was the question? Can you repeat for me? Puneet, I said that Kings 11 Punjab this year, this particular season, has been a favorite for many people who are usually neutral. Yeah. What do you think is the reason? What is the one thing that they're doing so differently? Fair point, Simar. Yeah. And Puneet, you will answer this question only. I just want to add something to what Simar said. That if thoda sa to banta hai na. So in fact, this question has also come. I can see where this question is coming from. When you look at this television, you get to see all these graphs that this team versus this team and iski fan following kahan hai. So when it comes to Punjab, it's not like it's just the north. They almost have a pan-India following, and that's why what Simar says makes absolute sense. That whenever it comes to the neutral fan, they're somewhere there with Punjab for some reason. I think that's why we would like to understand from Puneet that what is that reason? Why the neutral fans are with Punjab this year? Pankaj, see what I think. In India, people are more want to see good cricket rather than a team playing good cricket. Yeah, it's a good when when your side plays good. When we are thinking about Punjab, I'm from Punjab and Punjab is it's okay.
But when Mumbai plays a good cricket or Sunrisers Hyderabad plays a good cricket, we admire it. Yeah, it was a good. If you remember that ABD and I don't think that's true because I know for a fact you only support Punjab. yeah, But yeah. yeah, for a debate purpose, that argument can work. We know you too well. No, no. Actually, I was answering on that thing that okay, when somebody plays good, when your team is playing good, then if somebody other is also playing good, then it's fine. If your team is not playing good and somebody other is playing good, then we feel, oh yeah, what is wrong with them, these guys? Yeah, they should also play good. That's what I feel. So they all are supporting good cricket, not Punjab. They are supporting good cricket. So Simar, actually, you know what? I would love to hear this from you. What do you have to say for that? Actually, okay, let's just go to Priyansh and then we'll go to you because we are running out of time. We have to wrap up the show. So let's just close the show with this particular question and your answers. Priyansh, go for it. Yeah? Yeah, so the main reason for this is a really well balanced squad that they have. They have quick pacers, they have spinners. They don't have international level spinners. They only have Kartik, but they have a great talent. They have great talented spinners. They have great batsmen from hitters to the players who means they just stay on the crease like Pujara. So they have a pretty well balanced side, and I think because of this, after one day of the auctions, the next hangout we had, I said that Punjab's gonna win this. Okay, so maybe you knew a lot more than probably rest of the world did. he So has he has this secret. yeah, so maybe that's something similar we should ask him off here, without revealing too much. But let's hear your thoughts on this, Simar. That why do you think everybody is supporting Punjab, even the neutral fans? Punjab is a very good young team. They've come up so quickly this particular IPL. People didn't know who was going to be good, who wasn't going to be good, and it's suddenly picked up. It's like everybody's taken to the trend. Punjab is trending as a team right now, and plus, I don't know. For me, I don't want to see Chennai again winning. Getting there. Plus, I thought KKR and Bangalore would make it a little further, but KKR has unfortunately disappointed me. But yeah, Punjab is a fresh young team, and people see it on field that these guys are very well coordinated. They know what they're doing. They've come here with a plan. Even though Maxwell might be looking like he's probably lucky at this point, or he's playing rash or whatever, but he has his plan as we guys discussed. So I guess this team has that energy going with them, and which is pretty much taking them forward also. So I think it's the energy, it's the freshness that Punjab's brought in. That's true. I think the freshness also comes from the fact with the kind of cricket they're playing, the brand of cricket that they've brought to this IPL, which is the fearless cricket. We've been talking about how teams try to consolidate in the middle overs, but you look at Kings 11 Punjab, there is just no stop button or pause button with them. Regardless of how many wickets they've lost in this from the 8th to the 15th over, where teams usually look to consolidate, their brand of cricket is that we will score our maximum runs in this time. It's like catching every team by surprise almost every game, and it's a 20-over game. How can you be surprised? But they are. It's just like nobody thought, in this format, I think in the IPL season, nobody thought that there would be any team who would look and take risks in probably the 8th to the 15th over, that this 7-over period, which is where everybody tries to save wickets so that in the last 5-6 overs they can explode. But I think this fearlessness and to add to that, Maxwell magic, Maxwell Miller magic, the M&M show as we call it, for the fans, add to that, and the victory, and then of course a little bit of Preeti Zinta flavor, thrown in just for good measure. It's just, you put this all together, it's a great concoction here, which I think everybody just taking and enjoying it. As a Punjab fan, it's a great feeling. What more can you ask? So I think it's a mix of all these things, as what Priyansh said, what Simar, what you said. It's just a mix of everything. Yeah. Super. So I think, yeah, Simar, sorry, you were saying something. No, go ahead. Now, I was saying, I think with that wonderful note, I think it's time to wrap up
this edition of the KXIP Hangout, and yeah. So I thought I wanted to do that, but I thought you had to say something. Oh no, nothing. All right, guys. So thank you so much, Simar. A pleasure having you, and thank you for being here, helping me out with everything, and the fans, Priyansh, Puneet, Abhishek, and Umesh. Guys, thank you so much for being here. It was wonderful having you on the show. Thank you for your lovely and wonderful question that you asked to Manan and Anureet on the show today. It was great. Viewers, thank you for watching. I hope you had fun seeing the conversation of the fans with Anureet and Manan. Do stay tuned in to Circle of Cricket, and keep writing to us so that you can get the opportunity to talk to these guys sooner rather than later. Thank you for watching, guys. See you very soon. Thank This you. is Pankaj from Circle of Cricket signing off. Thanks, guys. Bye-bye. Bye. Thank you.